Now prove the following identity where the angle involved are acute angle for which the expression is involved. We have to prove. See, first, second, third, fourth, fifth. These questions we have to prove. So this all the questions, 10 questions are there. So which is very, very important. So one by one we will see. Now first we will take LHS cosec theta minus cot theta ka whole square. So always trick is you have to convert this in the form of sine, cos and tan. So cosec theta opposite is 1 by sine theta, that cot theta cos by sine theta. So just we solve 1 minus cos theta by whole square by sine theta. So once we solve, this square is separate, this square separate. So this we can write 1 minus cos theta whole square, 1 plus 1 minus cos square theta. So in the denominator, this is 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, and this is 1 minus cos theta 2 times. Just you cut this one, and this is the proof that is required. What? This is the right hand side, this is required. Now second question we have to prove. In the second question, just you see, cos A 1 plus sin A, 1 plus sin A by cos A equal to 2 sec A. So in this calculation, if you will see, so just first we have to take the LCM, 1 plus sin A cos A. This we took. After that, this will cancel, and cos square A 1 plus sin A का whole square. Just we expanded this. Now यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा हमारा 1, तो 1 plus 1 2, 1 plus 1 2, 2 plus 2 sin A. यहाँ पे भी हमारा this is the common value 2, 1 plus sin A, and once just do the calculation, 2 by cos A. This is the RHS. Now third we have to see. Third question is tan theta 1 minus cot theta 1 minus tan theta. This is 1 plus sec theta into cosec theta. So third question, just you do see the calculation. Tan theta by 1 minus tan cot theta by. So first, what the trick I told, first of all you have to convert this into the form of sine and cos. So sine theta by cos theta, 1 minus cos theta by sine theta, this we had written, and sine theta by cos theta, sine theta minus cos theta. Just we do the calculation. This is the first part, and in this is the calculation. Now यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर कट गया, दिस डिनोमिनेटर, यहाँ sin थीटा by cos थीटा, and this will go up, and sin थीटा minus cos थीटा. यहाँ से एक ये पार्ट आया, यहाँ से भी cos थीटा by sin थीटा, ये cos थीटा ऊपर चला गया, यहाँ से ये दूसरा पार्ट आया. Now this is sin square theta 1 cos theta, sin theta minus cos theta, cos square theta, sin theta minus cos theta. So LCM ones we will take. So sin theta minus cos theta, sin theta into cos theta. अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा sin q theta, and this is cos q theta, and this is aq minus bq, a minus b, a square plus ab plus b square. So based on that, we took the value sin square theta plus cos square theta plus sin theta into cos theta. So this is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now this will cancel, and this is 1. So 1 plus sin theta divided by sin theta into cos theta. So this we can write 1 by cos theta plus into sin theta. This is sin theta by cos theta. So this value is 1. ये कट गया. अब यहाँ पे हमारा cos theta को sec theta लिख देंगे और sin theta को cosec theta लिख देंगे. Similarly, fourth question number, if you will see, this is the question number 4. 1 plus sec A by sec A equal to sec sin square A minus 1 minus cos A. So if you will see the calculation of the question number 4th, 1 plus sec A, सेम टेक्निक सब में सेम टेक्निक पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आराम से बनेगा. तो इसका उल्टा हमने लिख दिया पहले, फिर इसको कैलकुलेशन किया, cos A plus 1 divided by cos A, और यहाँ पे cos A ऊपर चला गया. Now this is cos A plus this is cut, this is 1 plus cos A. RHS में लेंगे sin square A by 1 minus cos A. This we can write 1 minus cos square A, 1 minus cos A. So 1 plus cos A, 1 minus cos A just हमने सेपरेट किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज राइट हैंड, ये भी हमारा 1 प्लस कॉस ए. तो ये वैल्यू और यहाँ पे हमारा ये वैल्यू, ये दोनों इक्वल है. तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बोथ आर वैल्यू आर सेम. यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुआ है लेफ्ट हैंड में भी कैलकुलेट करके जो एक वैल्यू तक पहुंचे हैं,
और यहाँ पे राइट हैंड में कैलकुलेशन करके एक वैल्यू तक पहुंचे। सो वी गॉट द रिजल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, cos a minus sin a plus cos a by cos a plus sin a minus cos a. This is very important question. Now in this type of question what we have to do, first of all we divided by sin a. तो sin a से डिवाइड करने के बाद हमें जो आ रहा है cos a by sin a, यहाँ पे sin a by sin a और यहाँ पे 1 by sin a. This is the value. Now this is cot a minus 1 plus cot a plus 1 minus cos a. तो यहाँ ट्रिग्मेटिक वैल्यू एक साथ रख लिए, cot a plus 1 minus cos a के. Now this is very important question. Now after that what we have to do, this is cot a plus 1 minus cos a के. So यहाँ पे 1 को हम लोग लिख सकते हैं because this is the value where the it will come by the factorization of the above part. So यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए 1 को हम लोग फर्स्ट वी हैव टू राइट cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a. तो cot a प्लस cosec a ये हो गया. अब यहाँ पे cosec a प्लस cosec a माइनस cot a. अब यहाँ पे ये हमारा कॉमन हो गया. सो दिस इज नथिंग बट द कॉमन वैल्यू 1 माइनस. अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस cosec a प्लस cot a, 1 माइनस cosec a प्लस cot a. तो ये दोनों सेम है तो ये हमारा कट जाएगा. नाउ the value is cot a plus cosec a. This we have to prove. Now question number 6, 1 plus, this is the root type of question where you have to do the rationalization of the denominator part, multiply and divide by the 1 plus sin a. तो ये हमारा 1 minus sin square a हो जाएगा. ये 1 minus sin square a is equal to cos square a, and this we can write 1 plus sin square a, this square और ये square हमारा रूट से कट जाएगा. तो 1 plus sin a by cos a, this we can write 1 by cos a, यहाँ sin a by cos a, this is the right hand side part we have to bring. Now question number 7th, sin theta minus 2 sin q theta by 2 cos q theta minus. So जो भी हमारा कॉमन वैल्यू है that we take out. So sin theta cos theta 1 minus 2 sin square theta 2 cos square theta minus 1. तो what यहाँ पे 1 minus this thing we can write 1 minus cos square theta and 2 cos square theta minus 1. So 1 minus 2 plus 2 cos square theta 2 cos square theta minus 1. So sin theta 2 cos square theta minus 1 2 cos square theta minus 1 ये हमारा कट गया. And this is the final result of the RHS, that is tan theta. Question number 8, sin a plus cosec a whole square cos a plus sec a का whole square. तो पहले इसका a plus b का whole square के फॉर्मेट में हम इसको पहले ब्रेक किया. सो sin स्क्वायर a cosec स्क्वायर a plus 2 sin a cosec a. तो ये हमारा उल्टा है तो दिस इज ओनली 2. Here also cos a sec a ये हमारा कट जाएगा. तो वी कैन राइट यहाँ पे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a एक जगह लिया. फिर 1 प्लस cot स्क्वायर a, 1 प्लस this is we can take this cosec square a. Now this is the very important part. Now cosec square a, यहाँ पे हम इसका फार्मूला पहले लिख दिए, that is nothing but 1 plus cot square a, because cosec square theta minus cot square theta equal to 1 होता है. Now यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हमारा एक जगह आ गया. 2 sin a into cosec a ये उल्टा और sec स्क्वायर a 1 plus tan स्क्वायर a और इसका ये रिवर्स. सो यहाँ पे देखेंगे तो दिस वैल्यू इज 1 प्लस cot स्क्वायर a, यहाँ पे ये वैल्यू आ गया. दिस वैल्यू इज 1. सो यहाँ से यहाँ तक फिर ये कट गया तो 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2. नाउ आफ्टर दैट जो हमारा वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, दिस वी हैव टू ब्रिंग, वी गॉट इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, cosec a minus sec a sin a, सबको कन्वर्ट कर देंगे sin and cos में. फर्स्ट वी कन्वर्टेड दिस इनटू द sin and cos. आफ्टर दैट टेक द LCM एंड डू द कैलकुलेशन. सो cos is यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, हमारा ये बच गया. एंड दिस वी हैव टू प्रूव. Same way in the right hand side also we will do the same thing. 1 by tan a sin a by cos a by sin a, इसको कैलकुलेशन कर दिया. दिस इज also राइट हैंड साइड में ये आ रहा है. Now question number 10th. Now in the question number 10th, if you will see all the calculation we did,
Same process, 1 plus tan square A, 1 plus cot square A, just we have to do the calculation by sin A and cos A, and we got the result. Okay. So in this way, we can find out all the value. Thank you.